Couple weeks back, Pakistan unveiled its fiscal year 24 budget. It is as predictable as one has come to expect. A lot of borrowing to pay for the basic necessities. However, there was a renewed focus on IT in this budget. So I asked Mutaher Khan, who did an excellent roundup of all the IT-focused proposals in the budget for Dawn News, to come and share his thoughts. Let's listen in. Welcome back to the Misal podcast. Mutaher, how are you? I'm good. Thank you for having me back again. So let's get started with an overview about the budget. What are the key economic challenges that Pakistan currently faces, and how does this budget even attempt to address those challenges? Pakistan's simple challenge is that Pakistan just doesn't earn enough to meet its expenses. बहुत ही simple सी equation है that income doesn't cover up the expenses, so we have to borrow. And this applies in both senses कि आप रुपी के अंदर देखें या डॉलर के अंदर देखें. No matter how you look, हमारी income is always less than expenses. And the same thing happens in budget literally every year. दुनिया में जनरली अक्सर ममालिक में बजट में डेफिसिट में पेश होता है. ऐसा नहीं है. उसके अंदर revenues are not always equal to expenses, but पाकिस्तान का थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा ये आ जाता है कि the extent of revenues is still very low. कि अब इस साल पिछले कुछ साल से इस हद तक आ गया है कि पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं या टोटल नेट रेवेन्यूज़ हैं, they are not even enough to cover the interest payments that we have to pay every year to service our debts. And this happened this year as well. हमारी कुछ नेट रेवेन्यू रिसिट्स बनती हैं 60 ट्रिलियन से कम की, इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती हैं 60 ट्रिलियन से ज़्यादा की. तो और उसके बाद ये सिर्फ इंटरेस्ट है, राइट. तो इस पर तो अभी तो डेट की एक्चुअल प्रिंसिपल की सर्विसिंग, इसमें डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर, बाकी एक्सपेंसेस तो कहीं उसका शुमार ही नहीं हुआ. तो जब उसको मिलाते हैं तो हमारा बजट डेफिसिट फिर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है. So in order to meet that expenditure gap, we have to borrow more. और जब हम borrow करते हैं फिर obviously उसकी इंटरेस्ट आती हैं, तो उसकी इंटरेस्ट फिर अगले साल फिर मज़ीद बर्डन बढ़ता जाता है. तो एक डेट ट्रैप ऑफ सॉर्ट बन गया है, जिसकी वजह से अब हम अपने बेशतर तनख्वाह जो है, आधी तनख्वाह बेसिकली मुल्क की लगती है सूद देने में, बाकी फिर हम मज़ीद कर्जा लेते हैं, उसका मज़ीद सूद चढ़ता है. तो it's a very bad cycle that we are stuck in and that we continue to get further trapped in. जो कि इस बजट में भी यही एक थीम रही है. उसमें ये होता है कि अब उसके मसले होते हैं कि जनरली रेवेन्यू इतना बढ़ा नहीं रहे होते. आप एक बहुत ही छोटी टैक्स बेस को मज़ीद टैक्स करते रहते हैं. आप उसके अंदर आप कैश विड्रॉल पर टैक्स ले आएंगे तो सुपर टैक्स ले आएंगे, तो आप फलाना ढिमकाना टैक्स ले कर आ जाएंगे. लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स मोर और लेस उतने ही रहेंगे. एक बहुत ही कपल ऑफ बिलियन पीपल, चूँकि डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑब्वियसली हर कोई पे कर रहा है, बट डायरेक्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरी साइड पे होता है कि एक्सपेंडिचर की साइड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनएफिशिएंसीज की वजह से स्ट्रक्चरल बड़ी मसाइल हैं. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पेंशन वाली चीज़, तो अनलाइक अदर कंट्रीज, पाकिस्तान इस साल बजट का तकरीबन 5% जो है पेंशन्स में देगा. एंड दैट 5% ऑफ पेंशन्स इज नॉट कमिंग आउट ऑफ अ फंड लाइक इट्स डन इन एनी अदर कंट्री. इट्स टर्न आउट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर जो हम कमा रहे होते हैं या हम बोरो करके जहाँ से भी हम वो पेंशन्स देते हैं, rather than earning some interest, earning some income of our fund, of our investments, जिससे हम पेंशन्स पे ऑफ करें. तो ये भी नहीं हो रहा पाकिस्तान के. तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज है. देन यू हैव हम ट्रिलियन से ज़्यादा रुपए जो हैं पावर सेक्टर, नॉट जस्ट पावर सेक्टर बट ओवरऑल सब्सिडीज़ को दे रहे हैं, सब्सिडीज़ में दे रहे होते हैं. इसमें एक बेशतर पावर सेक्टर में जा रहा होता है, जो कि लिटरली सिर्फ ट्रांसमिशन डिस्पैच लॉसेस की वजह से 10-15%, 20% उसके
उसमें लग रहा होता है, उसको कवर अप करने में लग रहा होता है। तो ये बहुत पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो हमारे एक्सपेंडिचर का जो वो है, हम पैसा चला रहे होते हैं फॉर थिंग्स दैट हैवंट वर्कड आउट इन द पास्ट, that have been going on for the past 20 years, past 15 years, and we continue to service those again and again and again and again. Like your article mentioned that there was something very different about this budget in terms of IT. So IT is being seen as something that can help the Pakistan's economy, and because of that, there is some renewed interest in making sure that IT services have certain edge when it comes to like exports and stuff. So can you please talk a little bit about what was different about the budget in terms of IT? I think पिछले जनरली थोड़ा सा बजट से पहले भी अगर हम बात करें, पिछले 5 साल से एटलीस्ट ये कंसेंसस व्यू मैंने एटलीस्ट महसूस किया है कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स में कि आईटी इज इट, मतलब दिस इज इट। अभी अगर कोई ग्रोथ लेकर आ सकता है, दिस इज द ओनली सेक्टर। इमीडिएट रिटर्न भी ला सकता है और अच्छे रिटर्न्स भी ला सकता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इनकम, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ अदर एरियाज एज वेल। तो और ये चीज़ बजट के अंदर ऑफिशियली रिकग्नाइज कह लें कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा। जनरली पिछले कुछ अर्से से ये चीज़ एक व्यू है वैसे भी। तो अनलाइक द प्रीवियस एडिशंस, इस बार आईटी सेक्टर became, I wouldn't say center of attention, but like got a fair bit of attention from the policymakers in terms of incentivization. कुछ जैसे whether the industry association agrees with those incentives or not or finds them enough, it's another matter. But जैसे टैक्स इंसेंटिव था वो 0.25% का एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 3 years, which is, I mean, whether it makes a difference or not, I don't know. 0.25% is not going to do anything for the government in terms of revenue, or it's not going to do anything to the sector in terms of actual cost. So 0.25% the meanings, the number is a symbolic number. तो वो एक्सटेंड किया। उसके अलावा इन्होंने 2-4 इक़दामात लिए, पर एक जनरली एक सिंगल पेज 1.5 पेज इन्होंने डेडिकेट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर टू आईटी रिलेटेड इनिशिएटिव। उसके अंदर एक जैसे इम्पोर्ट रिलेटेड उन्होंने थोड़ी ईजिंग की है कि अगर आप अपनी 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को एज इम्पोर्ट्स मंगवा सकते हैं आईटी इक्विपमेंट के उसमें। दैट्स अ गुड थिंग। सो दूसरी चीज़ ये थी कि यू मेंशन लाइक द 2.25% जो टैक्स है, जो पाशा ने काफ़ी शोर मचाया था इस पे कि भाई you cannot be taxing something that brings in so much revenue, and this is not a good sign. All the other countries in the world, or at least the frontier or the emerging markets, give a lot of tax incentives and stuff. So I think it's more of a nuisance. That 0.25% tax is more of a nuisance because it's a red tape. You have to deal with bureaucracy and stuff, and that's not helpful. And but then again, it still needs to be taxed, and I think that's fine. 0.25% as long as the process of paying that tax is not burdensome on businesses. Other than that, there was also some mention in your article about like the venture fund that the government might be setting up. There were no details. Can you tell me a little bit about that venture fund? दो चीज़ें हैं इसके अंदर बीच में आगे क्या what all can go wrong वाली चीज़ के ऊपर बाद में आते हैं। बट नंबर 1 ये कि I mean in itself it's a good initiative, क्योंकि बाकी अक्सर ममालिक ऑलरेडी ये रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। काफ़ी सारों ने वेंचर फंड बनाए एक्सक्लूसिवली फॉर टेक सेक्टर, और बहुत सारे जो हैं अपने सोवरेन फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ऑब्वियसली हमारे सोवरेन के पास एज सच पैसा है, इतना तो पैसा नहीं है कि वो फंड बनाए प्रॉपर एंड मेक ओवरऑल sector agnostic investments across industries. But वो वाली चीज़ तो खैर I don't think we can see happening in the near future. But what's good कि इन्होंने चलो venture fund को शुरू किया है 5 million, which is not a lot of money, but it's still it's comparable to any venture fund in Pakistan more or less. अगर हम जैसे इंडस वैली का फर्स्ट फंड was 17.5 million, फातिमा गोभी I think was 20 million, ITY was 15 million टारगेट। तो इस तरह
मोर और लेस ये अमाउंट वहीं आ जाती है, 16-16.5 मिलियन आ जाती है। तो इसके अंदर एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ में बट we also need to keep in mind that this is not the first time that the government will be funding technology projects or technology companies. It has been doing for a long time under the Ignite Fund. Now, the difference between Ignite Fund and this fund is that Ignite, number one, was more focused towards engineering rather than just the startups, right? कि उसके अंदर अगर आप कुछ वो बना लें, प्रोस्थेटिक आर्म बना लें, तो यू माइट गेट फंडिंग फ्रॉम इग्नाइट, या आपने FYP अगर आपका अच्छा हुआ तो यू कैन गेट सम सपोर्ट फ्रॉम इग्नाइट टू टेस्ट दैट। तो वहाँ पे टिकट साइजेस बहुत अलग होते हैं। इग्नाइट के अंदर जनरली 10 मिलियन का आपको ग्रांट मिल गया, सॉरी 10 मिलियन कह रहा हूँ, मतलब मिलियन का ग्रांट मिल गया, 1.5 मिलियन ग्रांट मिल गया, जो कि बड़ा रीजनेबल होता है। लेकिन उसकी साइकिल्स होती हैं 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इग्नाइट, फ्रॉम व्हाट आई नो, हैजंट बीन, इट्स मोर ऑफ एक जगह से पैसे लेता है गवर्नमेंट, जो उन्हें बजट करती है, टेलको के फंड, टेलको के पैसों, प्रॉफिट रेवेन्यू के थ्रू उसके पास पैसा आता है, दैट्स द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और उसको फिर वो आगे लगा देती है, एंड उसमें वही सरकारी रेड टेप बहुत सारा होता है। Now, this fund will be more of fund, which is at least venture fund से that's the expectation. अगर वो नहीं करते then it's a different problem. But इससे ये होगा कि they have a target size which will be, I'm assuming, over a particular window, 10 साल का फंड है, कितने साल का फंड है, and it will have a certain thesis again, I'm assuming. So it's different from Ignite in those senses, and will be expected to make a return rather than just making investments for the sake of promoting tech innovation or encouraging innovation. ये वाला उसका फोकस नहीं होगा। तो अगर ये it will be again from purely, or how this model has been replicated elsewhere, this will be a for profit, an IRR maximizing fund, जिसका काम ये होगा कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करे और उसके बाद उनको फॉलो अप करे, उनको सपोर्ट करे। नाउ द इशू इज के हाउ विल दैट वर्क। गवर्नमेंट इस 5 बिलियन में से इसको मैनेज, क्या मैनेजमेंट फी के गवर्नमेंट को ही जाएंगे, सॉरी 2% मैनेजमेंट फी के गवर्नमेंट को ही वापस जाएंगे, विल दे गेट प्राइवेट कमिटमेंट्स, हु विल मैनेज इट, मैनेज करेंगे तो 1.5 साल सेटअप करने के लगाएंगे, और सेटअप करने के बाद एक इन्वेस्टमेंट साल की करेंगे, और उससे ज़्यादा पैसा CEO अपनी सैलरी में लेके जा रहा होगा और पर्स में लेके जा रहा होगा। Whether that is going to happen, which has a very high chance of happening. I mean, हम अभी भी शर्त लगा सकते हैं दोनों on opposite odds, I don't know, whatever the odds may be, कि there would be some guy who worked somewhere in the US for a few years और उसको पाकिस्तान वापस आने का मूड हो रहा था, तो वो आके बैठ जाएगा, फंड चलाएगा, फंड में इन्वेस्टमेंट 2 साल में 3 साल में कोई होगी नहीं, और उसके बाद गवर्नमेंट उससे बेजार हो जाएगी, तो वो कहेगा कि पब्लिक सेक्टर में काम नहीं होता जो कि नहीं होता, उस पर कोई वो नहीं है। बट तो ये जनरली सरकारी इदारों की एक ट्रैजेक्टरी रही है। दे ब्रिंग इन टैलेंट from qualified people placed abroad, उनको लेकर आते हैं, एंड देन कुछ होता नहीं है। तो अगर ये वाली चीज, एंड दिस अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे हो सके। नाउ और द अदर वे राउंड कुड बी कि ये 5 बिलियन गवर्नमेंट बेसिकली LP बन के इन्वेस्ट कर दे इन अदर फंड्स, विच माइट बी अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन। कि अगर आपको, क्योंकि मैनेजमेंट इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट, it's the GP part of it. LP part is still relatively easier गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना। I think ये एक रास्ता कर सकते हैं, गवर्नमेंट becomes an LP in other funds and invests in opportunities, who then invest in opportunities that come. Personally, I just don't think, like you said, you are on the opposite side, that you don't feel anything will happen. I, of course, agree with you.
not much will come out of this fund, because as soon as the government changes, new people will come, they'll have different ideas. And a lot of these policies are dependent on who's in power. And when the power dynamic shifts, the policy shifts and, priorities change. And I think that's always a bad thing. It should not be tied to a single political party. It should just be tied to the IT vision plan for like future years. But anyways, that's a completely different thing, something that we don't control, and we can just, analyze and talk about it. One more thing that I wanted to, get your thoughts on is like, when venture funding, of course, since the beginning of this year, it's almost non-existent now. So does this budget help restore the confidence? I think that ship has sailed. मतलब अगले कुछ महीने में, अगले possibly even सवा साल के अंदर, I don't think that confidence is coming back. Confidence इन्होंने बर्बाद किया है, इतने कॉन्फिडेंस का कबाड़ा बनाया है, फिर उसके ऊपर आग लगाई है, और उसके ऊपर आग लगाने के ऊपर मजीद उन्होंने वो किया है कि और वो कर दें, जस्ट टू मेक श्योर दैट नो कॉन्फिडेंस इज लेफ्ट, एंड दे हैव डन एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी टू मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस ना बचे, एंड दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड अदर सेक्टर इन अदर सेक्टर्स, बट इवन टेक के अंदर मुख्तलिफ फैसेट्स जो हैं आपके IT सर्विसेज के अंदर भी इन्होंने यही किया है, इन्होंने जनरली टेक सेक्टर के अंदर भी यही किया है, टेक टैलेंट के अंदर भी यही किया है. आई थिंक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का भी एक आर्टिकल था, द फाइनल स्ट्रॉ फॉर पाकिस्तानी टेक टैलेंट, एंड दैट हैज़ बीन यू सी इट, यू फील इट ऑन द ग्राउंड एज वेल. आई थिंक अभी लिटरली इफ यू स्पीक टू एनी, तो बजट इन दैट सेंस इज अ नॉन इवेंट. सो ये इन मैनी सेंसेस, मतलब पिछले कुछ अर्से से गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक की सारी कम्युनिकेशंस हैव बीन नॉन इवेंट्स. दे हैवंट डन एनीथिंग टू restore the confidence because there is no credibility in those initiatives. There is no credibility left in the government statements, and not just government, state bank का ये. I'll give you an example. State bank के पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है 5 से 7% की रेंज में होगी इन द मीडियम टर्म. वो मीडियम टर्म होके गुजर गया, लॉन्ग टर्म में आना शुरू हो गए हम, लेकिन वो 5 से 7% पे नहीं आए. लिटरली वी आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट कितना 8 times दैट लोअर बाउंड. 38% पे अभी इन्फ्लेशन है, 5 से 7% की रेंज पे स्टेट बैंक कह रहा है. टू बी जनरस हम 6x ऑफ द रेंज पे बैठे हुए, एंड स्टेट बैंक अभी वो कर रहा है. तो कम्युनिकेशन इटसेल्फ गवर्नमेंट की जनरली इट इज़ वेरी इमटेरियल एट दिस पॉइंट, क्योंकि आई मीन लोग जो हैं अल्फाज को एक हद तक देखते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, विच वॉज टेक. 2-3 चीज़ों ने बड़ा वो किया है. एक फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर के लिए जनरली the rupee devaluation, services के लिए rupee devaluation, not devaluation, the rupee uncertainty in exchange rate has been a big blow. If you see कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने पैसा पाकिस्तान रिपैट्रिएट करना कम कर दिया है, तो IT एक्सपोर्ट्स इसी वजह से कम हो रहे हैं. देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही वैल्यू चेन के बहुत निचले हिस्से पे ऑपरेट करता है, जहाँ पे टिकट साइजेस लिटरली $15,000 $20,000 के काम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, विच इज़ पीनट्स पे काम कर रहे होते हैं इफेक्टिवली. तो रिसेशन वगैरह का इससे पाकिस्तानी IT सर्विसेज पर कोई इम्पैक्ट खास नहीं हुआ. बट लेकिन जो डॉलर्स आ रहे थे, दे स्टार्टेड holding those dollars elsewhere in their US companies, in their foreign jurisdiction registered companies. तो IT सर्विसेज में ये पिछले अरसे से चल रहा था. फिर उसके अलावा फिर आपने जब इंटरनेट बंद कर दिया, तो ये एक बड़ा वो धचका हुआ है कि ओके यार, अब देयर इज़ नो गोइंग बैक. दैट फीलिंग I've been noticing, I've been experiencing personally भी. I think हर एक का ये है क्या, हर फाउंडर से देखो तो काफ़ी सारे फाउंडर मेरे बात करके बेचारे पछता रहे हैं कि मतलब पैसे क्यों रेस कर लिए. कि अब करें क्या, पैसे तो रेस कर लिए, अब क्या करें, मतलब काम तो है ही नहीं, कुछ भी कर ही नहीं सकते, खर्च कहाँ करें. तो ये वाली एक फीलिंग चल रही है. तो उस मामले में बजट डजंट डू एनीथिंग, डजंट इवन स्क्रैच द सरफेस. Sounds good.
So like it's doom and gloom basically. Hopefully something changes. And before you go, I just want your reaction to what happened with Bykea. Like what the hell do you think happened with Bykea, and how is it going to bounce back? I think security के Bykea के पहले भी हुआ था. There are some concerns with security. It's about time that Bykea realized that. But then on the other hand, Bykea has much bigger problems on hand than security. Security तब होती है जब demand आ रही होती है. अभी तो demand का मसला चल रहा है. So I mean, I don't know. It's just, what happened? I mean, there are multiple theories. Reddit तो एक अलग ही दुनिया में जा रहा है. If you saw Reddit के अंदर एक बहुत conspiracy theories के तो बादशाह है ना. मतलब किसी ने लगाया कि बाइकिया के CIO ने ये किया और उससे फिर लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया जा रहा था. तो हाथापाई मतलब एक अलग ही दुनिया में रेडिट घूम रहा होता है. वो पाकिस्तानी रेडिट, आई डिड नॉट नो कि पाकिस्तानी रेडिट इस हद तक होता है. बट फ्रॉम व्हाट आई नो, मतलब जो मार्केट में रूमर्स थे बिफोर बाइकिया स्टेटमेंट इज वेल. मैं पोस्ट बाइकिया ने तो यही कहा था कि थर्ड पार्टी टूल है, विच इज़ फ्रॉम व्हाट आई नो M3 टेक एक कंपनी है, उनका था. बट दिस हैज़ बीन सर्कुलेटिंग. उससे पहले बाइकिया की कम्युनिकेशन से पहले ये एक आध जगह से आया था कि M3 टेक का वो हुआ है. तो इट्स थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन टूल. व्हाट्सएप की APIs वगैरह देते हैं, पुश नोटिफिकेशंस देते हैं. तो they were compromised from what I know, but there is a possibility that it could be a disgruntled employee as well. You can see that happening. Matlab, whether you can see that happening twice is another matter. But first time round, I think you can see that happening. One thing that I was very interesting about, so मैंने जब पहली बार देखा ना वो मैसेज, तो I was like, okay, क्योंकि गाली जो दी गई है वो पाकिस्तान को दी गई है, राइट? लाइक दे डिडंट टॉक अबाउट बाइकिया, राइट? सो गाली पाकिस्तान को दी गई है. एंड इफ यू नोटिस, every single time I've heard Munib Mayer talk, he talks about being patriotic, made in Pakistan. We do this for Pakistan. We do that for Pakistan, which is a good thing. Like, he tries to sell that, like, this is a very Pakistani brand and it's a Pakistani company and all that stuff. And we're doing good for Pakistan. So I think someone was either pissed off at the fact that he keeps talking about that they're doing this for Pakistan. And he said something completely against the brand. Or it just could be like, someone saying, okay, this is the best thing that can fit in like one small, message that pops up on your phone, and let's just go for it. So, but anyways, it was just hilarious. In terms of PR, it shows there's a lot of work to be done. Yeah. I think एक और interesting जो है, I think a lot of people pointed out as well, र की spelling जो है पाकिस्तानी, र को पाकिस्तानी अंग्रेजी में R से लिखते हैं, D से नहीं लिखते. तो that is one interesting bit. तो I don't know कि पाकिस्तानी है नहीं है, या this is a younger generation of Pakistanis that grew up on Indian stand-up comedy and Indian content. So that could be it's possible. Yeah. Thank you so much once again for joining me, and hopefully we'll have you back. Thank you for having me. Thanks for listening to the Misal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.